What is epiglottis? Epiglottis is a flap-like structure which guards the opening and closing of the larynx. So whenever it is ये flap, जैसे आप ध्यान रखिए कि आप किसी को फूंक मार के खोल सकते हैं किसी चीज को बंद कर, अगर ये ओपनिंग है और अंदर से फूंक आएगी ऐसे खुल जाएगा, बाहर से आएगी, ठीक है. So it is kind of a flap-like structure. What is its function is to guard the opening of the larynx so that food particle does not enter into the larynx. ठीक है, ये ढक्कन की तरह काम करता है एपिग्लॉटिस जो है, और ये एक ओपनिंग को गार्ड करता है. जिस ओपनिंग को गार्ड करता है वो larynx, that opening is called as glottis. Okay, so it guards the opening of the larynx, that is the glottis, and it is a flap-like cartilaginous movable structure. Okay, it is an elastic cartilaginous structure. अच्छा, नाउ थायराइड कार्टिलेज, वो बॉयज के केस में हम कहते हैं ना कि 10th क्लास में हो जाते हैं तो यहाँ पर एडम्स एप्पल बन जाता है, तो इट इज अ हाईलाइन कार्टिलेज, इट इज नॉट एन इलास्टिक कार्टिलेज. Thyroid cartilage is a hyaline cartilage which actually leads to the formation of Adam's apple in case of, especially prominent in case of boys. The function of, what is the function of all these cartilages that we have discussed? Most of the cartilages, they have the function that they act as, what do they act as? They act as the sites where the ligaments they can get attached. Okay, so very important, ligaments they can get attached to these surfaces. So laryngeal cartilaginous as well as hyoid bone and epiglottis are the sites जहां पर हमारी ligaments जो हैं वो attach हो सकती हैं. ठीक है, अच्छा, अब similarly cricoid cartilage is also hyaline cartilage. ठीक है, now थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका क्या काम है, कौन से लिगामेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका सरफेस को ये अटैच करके रखता है, कौन सी विच लिगामेंट्स इट इज एसोसिएटेड विद. सो इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द लिगामेंट्स व्हिच गार्ड द ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस एंड देयरफॉर द एंट्रेंस इनटू द ट्रैकिया. ऊपर से ग्लॉटिस की और नीचे से ट्रैकिया की एंट्रेंस को गार्ड करते हैं. Okay, so this is the function of these cartilages and it does not allow entry of any food particles. Now, inside the larynx, okay, now अब हमारी जो ग्लोटिस है, if you see over here, कि यहाँ पर हमारी ग्लोटिस के अंदर, this is the opening or the glottis. ये ग्लोटिस खुली हुई है, ये ग्लोटिस बंद है और ये डिफरेंट कार्टिलेजेस हैं जिसको ये क्या है, जिनको इसने विच आर सराउंडिंग दिस ओपनिंग. तो इफ यू सी हियर, अब आप ध्यान से देखिए जिसको मैं राउंड कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द वोकल फोल्ड. ठीक है, तो व्हाट इज दिस वोकल फोल्ड? वोकल फोल्ड्स आर बेसिकली हमारी वोकल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं. द वोकल फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स आर वेरी thin structures or thread-like structures which are there inside the larynx, and whenever air passes through these structures it causes vibration of these membranes, and whenever there is vibration of the membrane the sound is produced. Okay, it is in very crude language that I am telling what happens. So pitch जो है, they also control the pitch of the sound कि कितना, depending upon the stretching of the vocal cords, and the stretching is brought about with the help of muscles and the cartilages which are there in the larynx. तो आप imagine करिए आपके पास एक रबर बैंड है, आप उसको बेटा जी धीरे रखते हैं तो वो मोटी साउंड बनाता है, खींच के उसको ऐसे ऐसे करिए तो वो क्या करता है, थोड़ी पतली साउंड होती है, और खींचिए तो और पिच उसकी चेंज हो जाती है. So the vocal cords, the function of the vocal cord is to produce the sound due to the forceful movement of the air into and outside the larynx. So that is the function of the vocal cord and they are there inside the larynx. Okay. So corniculate and arytenoid cartilage, they play a very important role in the production of sound by changing the, by helping the vocal cord in changing the pitch and also producing the sound. ठीक है, okay. Now larynx के बाद
What is the next part? The next